Hello, hello everyone. I hope you all are doing well. Welcome again at Code Mentor XYZ. So in previous topic, we have made a small program just to learn how we exactly write a small hello world code in Python. What exactly the way we create a file? What is the extension? How we execute it? Also, along with that, I have also given you some briefs like how to install the Python and uh, what was like history of Python, like how it was invented and who invented, why it is useful, why in many field of work, especially in IT, we are using it. So how it making an impact on whole IT industry. So this is all we have covered in our previous topic. So now we are again moving to more coding part and understanding the basic fundamental concept. These concepts are actually nearly same for any language, but in every language based on their like the approach based on their we can say like the theory behind they were created. So a few things different in other language, like few things written in different way. In some language it is written in some different way. तो पाइथन में अगर मैं बात करूं, अभी जो आज का टॉपिक हमारा है जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है डेटा टाइप्स का। तो डेटा टाइप्स इन पाइथन की जब हम बात करते हैं तो पहले हम ये समझें कि डेटा टाइप क्या है। तो जो आपका डेटा टाइप है वो बेसिकली ये बताता है कि लाइक आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, तो उस वेरिएबल का जो नेचर होगा वो क्या होगा। तो मैथमेटिकल टर्म में अगर हम समझें तो अगर आप जैसे काउंटिंग कर रहे हो तो आप जो है नॉर्मली इन जनरल आप जो काउंटिंग करते हो तो इंटीजर वैल्यू लेते हो, राइट। आपको काउंट करना है किसी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली यू विल नॉट से 1.5 स्टूडेंट या 4.5 और राहुल स्टूडेंट आर समथिंग। सो लाइक you always count it in numeric value and full numeric value, integer. So uh, that is a डेटा टाइप इन लैंग्वेज। सो कंप्यूटर कैसे समझेगा उस चीज को, है ना। तो वो हम कंप्यूटर को ये समझाने के लिए कि जो पर्टिकुलर वेरिएबल हमने लिया है ये इसमें हम क्या करेंगे, इसमें किस तरीके की वैल्यूज को होल्ड करेंगे, तो इसके लिए हम जो है उसका टाइप डिफाइन करते हैं। तो यहां मैं बता दूं दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक होती है स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज और एक होती है जो स्ट्रिक्टली टाइप्ड नहीं होती। ठीक है। तो जो स्ट्रिक्टली टाइप्ड होती है वो थोड़ा सा क्या होता है उनमें कि बहुत स्पेसिफिक लेके चलते हैं वो। क्या वेरिएबल होगा, साइज क्या होगी, जैसे सी लैंग्वेज में आप देखते हो ना, क्या वेरिएबल होगा, उसका टाइप क्या होगा, उसमें कितना डेटा, मतलब इवन साइज तक वो स्पेसिफाई करके चलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब वो बहुत स्पेसिफिक लेके चलते हैं, और आप अगर उसको चेंज करते हो, अगर उसमें आप कोई ऐसी कोई बग होती है तो दे क्रिएट द एरर आल्सो। ठीक है। और ये कंपाइल टाइम एरर होती है। ज्यादातर जो स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है वो कंपाइल टाइम में ही आपको एरर शो कर देंगी। रन टाइम का तो मतलब बात की बात है। ठीक है। तो स्ट्रिक्टली टाइप्ड जो लैंग्वेज होगी उसमें इस चीज का स्पेशल अटेंशन होगा कि हमारा जो डेटा टाइप है, कोई वेरिएबल हम बना रहे हैं तो उसका डेटा टाइप वहीं के वहीं डिफाइन कर दें। ठीक है। टाइप कन्वर्जन अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है। मतलब टाइप कन्वर्जन का क्या है कि टाइप कन्वर्जन एक अलग प्रोसेस है। टाइप्ड स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज होना और टाइप कन्वर्जन का अवेलेबल होना दोनों अलग अलग बातें हैं। पर ये दोनों चीजें समझनी जरूरी। जब हम डेटा टाइप की बात करें तो ये दोनों चीजें समझनी। एक तो आपको ये समझना कि डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट क्या है। तो क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जो है ये देख रहे हो कि लाइक
ऐसे समझो आप। This is a room where I'm sitting. Okay, so I'm working at computer. I'm using some tools, like some software, some way, like I'm using a mic or headphone, or like I'm using a laptop, I'm using keyboard, I'm using. So these things, if we make it like if we think like we are demonstrating the रूम इन कंप्यूटर, तो हम जो काउंटेबल थिंग्स हैं, जो न्यूमेरिकली काउंटेबल थिंग्स हैं, उनके लिए हम कैसा वेरिएबल लेंगे? इंटीजर टाइप का। तो उसका डेटा टाइप आईएनटी या इंटीजर हो गया, ठीक है। अगर हम लेट्स से कितने का कंप्यूटर है, मैं कितने का जो है मतलब मेरा लैपटॉप है, या मतलब कितने का मेरा माइक है, कितने का मेरा ईयरफोन है, तो ये चीजें मनी मॉनिटरी वैल्यूज जो है फ्लोट वैल्यूज में देते हैं। भाई ऐसा हो सकता है ना कि 12.5 या 120.50 जो है इतने यूएसडी का मेरा लैपटॉप है, या ऐसे समथिंग, ठीक। तो जब आप कोई मॉनिटरी वैल्यू या कुछ इस तरीके की जिसमें डेसिमल आ सकता है, तो हम उसके लिए फ्लोट टाइप का डेटा टाइप करते हैं, ठीक है। अब अगर हमको जैसे किसी का नेम स्टोर करना है, ठीक है, ये लैपटॉप है, इसका कुछ नाम मान लो मैंने दिया है, कोई मॉडल नंबर है, ठीक है। अब मॉडल नंबर को तो मैं इंटीजर वैल्यू, जरूरी नहीं है मॉडल नंबर इंटीजर हो सकता है ए बी सी डी एक्स वाई जेड 1 2 3 4 5, ये मिक्स, तो इसके लिए हम स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू। बुलियन क्या? डिसीजन मेकिंग। वट वेन एवर देयर इज अ नीड ऑफ लाइक इफ एल्स के कंडीशन में जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, उस तरह के वेरिएबल्स के लिए आप बूल का यूज करते हैं। अब फिर ये जैसे अब पाइथन की बात मैं कर रहा हूँ, तो पाइथन में जैसे एक बूल के बाद में एक लिस्ट हो गया, तो लिस्ट थोड़ा सा स्ट्रक्चर का बेस पे हो गया। लाइक हम कोई एरे ले रहे हैं और वो मतलब उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, तो उस तरह के जो एलिमेंट है उसके लिए सब में नहीं होता लिस्ट। मतलब लाइक अगर हम सी की बात करें, तो हम उसमें फिर लिंक्ड लिस्ट वगैरह बनाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब वो उस तरह के पॉइंटर वेरिएबल्स और उनको सबको करके हम उनसे बनाते हैं ये चीज़। नॉर्मली इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और जो है आपका कैरेक्टर जैसे वहाँ पे होता है, ठीक है। तो बूल, ये बुलियन, ये मोस्टली लैंग्वेजेस में होता है, ठीक है। तो लिस्ट थोड़ा सा स्पेसिफिक है फॉर दिस वन। अदर में ये वेरिएबल के बजाय एक एरे के तरीके से यूज होता है, जैसे एरे एक वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। पीएचपी अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो एरे एक डेटा टाइप है। सी में भी एरे एक डेटा टाइप है। तो जावा में भी आपका एरे डेटा, उसे इसमें लिस्ट होता है, ठीक है। टपल होता है, टपल में मतलब जैसे ये वैल्यूज को मतलब की बेस्ड वैल्यूज। टपल और लिस्ट में बेसिक सा डिफरेंस है, लाइक ऑर्डर इम्यूटेबल कलेक्शन, और एक होता है ऑर्डर लेकिन म्यूटेबल कनेक्शन, ठीक है। म्यूटेबल इम्यूटेबल पे मैं एक अलग से पूरा बना दूंगा, आपको बताऊंगा उसको डेवलपमेंट में, प्रोग्राम में बताऊंगा कि किस तरीके से इनका डिफरेंस होता है। तो आपका जो है क्या कहते हैं, सेट होता है इसमें जो अनऑर्डर्ड और यूनिक वैल्यूज, लाइक 1 2 3 4 1 2 3 ऐसे, मतलब मल्टीपल उनका जो है मतलब सेट आप बनाते हो, तो सेट भी आता है। ये भी हम आगे जब हम एक छोटा सा मतलब प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, देन वी विल सी लाइक हाउ इट इज यूज्ड इन द पाइथन। डिक्ट ऐसे ही है, तो ये भी एक तरीके का वो है। ये मतलब आप जैसे सी लैंग्वेज में आप स्ट्रक्चर एक होता है, तो वो बनाते हो, तो उस तरीके से की वैल्यू पेयर्स के उस पे आप यूज करते हो। तो ये सारे डेटा टाइप्स है जो पाइथन में होते हैं, ठीक है। डेटा टाइप, अब तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि डेटा टाइप क्यों होता है, हर लैंग्वेज में होता है, ठीक है। अब एक चीज होती है डेटा टाइप में कि स्ट्रिक्टली टाइप्ड है या नहीं है, तो मैं आपको पाइथन के बारे में बोलूंगा कि एक्सप्लिसिटली टाइप्ड, सॉरी, स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज ये नहीं होती है, ठीक है। मतलब आपको वेरिएबल डिफाइन करते वक्त जरूरी नहीं है कि आप उसमें ये डिफाइन करें। अब अगर आपने लिखा है x इज इक्वल टू 9, तो सिंस 9 इज ए इंटीजर वैल्यू, x का जो डेटा टाइप होगा वो अपने आप ये जो है रन टाइम में डिफाइन कर लेगी कि ये इंटीजर है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग उसको फर्दर, अगर आप x इज इक्वल टू 9 करते हो, y इज इक्वल टू 10 करते हो, और कहीं आप अगर x प्लस वाई करते हो, तो x प्लस वाई में वो 10 और 9 को ऐड करके 19 आंसर, ये हम छोटे से प्रोग्राम में भी देखेंगे। तो बेसिकली क्या है कि आपका जो टाइप है वो यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये स्ट्रिक्टली टाइप्ड नहीं है, ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रिक्टली टाइप नहीं। इसका क्वेश्चन भी बन सकता है इंटरव्यू में, आपसे पूछ सकते हैं कि एक स्ट्रिक्टली टाइप्ड जो है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा लिखा भी है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में, इज पाइथन कंपाइल टाइम, इज पाइथन स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज। तो पाइथन स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। आप इसमें
डिफाइन नहीं करते हो कि ये इंटीजर है या क्या है, ऐसा कुछ नहीं डिफाइन करते हो, तो ये अपने आप रन टाइम में ये चीज डिक्लेयर करती है, ठीक है। और दूसरा एक, जैसे मैंने इसमें यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखा है, इस पाइथन है कंपाइल टाइम और रन टाइम, यहाँ पे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें होता है, ठीक है। आप अगर इस लेवल पे ला करके एक्सप्लेन करते हो तो थोड़ा सा आपको हो सकता है आपको इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस हो जाए कि पाइथन जो है वो प्योरली कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। आप ऐसे समझो, पीएचपी और जो ये है पाइथन है, ये दोनों जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि वो पहले इंटरप्रेट होती है लाइन बाई लाइन, ठीक है, और उसके बाद फिर वो मतलब रन होती, तो इनको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। तो पाइथन इज प्राइमरली रन टाइम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, और ये इंटरप्रिटेशन जो होता है रन टाइम में होता है, ठीक है। बट द फॉल ट्रूथ जो मैंने लिखा, पाइथन इज नॉट प्योरली कंपाइल्ड नॉट प्योरली इंटरप्रेटेड। व्हेन यू रन ए पाइथन प्रोग्राम, इट इज फर्स्ट कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड, वो एक डॉट पीवाईसी करके फाइल में स्टोर होता है, ठीक है। और देन ये बाइट कोड जो है वो पाइथन के वर्चुअल मशीन में जो है एग्जीक्यूट होता है रन टाइम में, ठीक है। तो एक तरह से आप इसको समझ सकते हो कि ये मतलब पूरी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि ये रन टाइम है, ठीक है, और ना ही पूरी तरीके से कह सकते हो कि आप कंपाइल्ड, ठीक है। तो कंपाइल टाइम मिक्स आंसर अगर आप उसको देते हो आप इंटरव्यू को, तो ही विल बी हैप्पी, ओके। डायनेमिकली टाइप, जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज पहली बात तो नहीं है। डायनेमिक टाइप जो है वो अपने आप वहीं पर चेक होता है जब रन टाइम में वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। और इसका एक ड्रॉबैक भी, इसका ड्रॉबैक ये है कि आपका कोड का एरर पहले नहीं आता, कंपाइलेशन के टाइम में एरर नहीं आता, ये सारा एग्जीक्यूशन आपका एरर जो आएगा वो आपका जो एग्जीक्यूट कर रहा होगा कोड उस टाइम में आएगा। तो दैट्स ए थिंग लाइक वेयर जावा इज मोर बेटर, अगर इस तरह से देखोगे आप, ठीक है। रन टाइम में सी लैंग्वेज रन कंपाइल टाइम में ही आपको बग दिखा देंगे कि कुछ गड़बड़ है, आप उसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये उसके फिर चलते हैं बैक टू, तो जैसे मैंने आपको बता दिया ये है इसके डेटा टाइप्स, यस, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो नेम इज इक्वल टू इतना, और ये इंटीजर, ठीक है। ये भी एक तरीका है इनफोर्स रन टाइम बट एक्ट लाइक गाइडलाइन, गाइडलाइन है कि आप 3.5 में इस तरह से टाइप हिंट दे सकते हो, ठीक है। तो ये एक है, लेकिन जरूरी नहीं है, मैंने आपको पहले बताया जरूरी नहीं, आप ए इज इक्वल टू 25 लिख सकते हो, पी वाई इज इक्वल टू आप 3.4, अपने आप पी आई फ्लोट हो जाएगा, ठीक है। एज एक्टिव इज इक्वल टू बोल, और ये अपने आप बुलियन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे है, ठीक है। तो I think that's all, and now we will make a program, okay. Okay, so let's make it program, small program to understand it. So let's open our file which we have created while making hello world program. So we will learn all data types and uses of them in the same file, okay. So let's make a variable, let's say x, assign it a value 20, then make a variable y and assign it value 30, and let's print it, okay. Print x plus y. So since x, as per our like, as we already looked at the definition of variables, technically 20 should be assigned in x, and it should treat as integer. Y also get 30, so it should treated as integer. And if we do sum of two integers, then answer should be like numeric addition, a simple numeric addition, 50. So let's see if it is like that. We'll execute it. Okay, 50. That's good. That's very fine. Well understood. Since seems like everything is fine. Okay. अभी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं. Now take a variable z and assign a string value. Let's say Rahul. Okay. Do the same thing. Print x plus z. Technically, as we know, string and numeric value cannot be added. At least not possible in general. Okay. So it should give error. Let's see if it is giving. Oh, good.
unsupported operand types. Okay, so plus cannot add integer and string value. That's very good and perfectly working as well. Okay, so if there is a question like that in your, especially in interview, then you can simply answer like, this is wrong. So true, false. You mostly got such questions in MCQ of interview, mostly in MNCs or other things. So not exactly this, but something similar. Okay, you have to take the decision whether it will create an error, or it will sum, or it will create some output. Okay, valid output. So let's do one more thing. String is not compatible with integer. Float is compatible. Let's see example, but still, even we know, but let's take example. X, Y, Z already there. So let's say A is equal to 4.5. Okay. And now print X plus A. And look at this. Sorry, we have to remove this one because it's not possible. Z cannot be added. Now execute again. Oh, sorry, I have not saved. Okay, sorry, not Z, X. Okay, now execute it. So you can say 24.5, and that's good. I mean, that was 20 and it is 4.5, so it is adding well. Now let's take one more data type and add it. Okay, wait. Oh, sorry, Control Z, not like this. Take a variable here. Let's say B is equal to true. It's a bool. So normally in many languages, bool is kind of 1 or 0. Okay, true or false, like 1 or 0. So in many languages, uh, we uh, we are able to like convert it like true for 1 and false for 0. So what happens if we do the same thing in Python? So let's add print x plus b. And if we do this and go here and execute the code again, you can say 21. That's interesting. So Boolean is a compatible type. Boolean is a compatible type for integer. That's the important thing to know. Okay, string is not compatible. Boolean is like compatible. Okay, so if Boolean is compatible and 2 is converting as 1, and let's do the same thing. Print, take a C is equal to false, and do the same thing here, x minus c. Sorry, let's see what happens here. So can see 20, because 20 was the initial value of x, and when you added subtracted a for boolean value false, since c is false, so c is 0, so x minus c is what the value of x. Okay, so that's good. Now do another interesting thing. You have taken z is a string variable. Now make another string variable. Let's say A, B, C already there. D. D is equal to Mishra. Okay. Now do the same print with Z plus D. Okay. So if we do Z plus D, so let's see if how it works here. See, okay, execute this again. So you can see Rahul Mishra. So it worked like a glue, as I said. Okay. So Z plus D, which is O operator overloading, working like that. जब दो स्ट्रिंग आप ऐड कर रहे हो तो वो जो है ग्लू की तरह जुड़ जा रही है एक दूसरे से. ठीक है, तो राहुल एंड मिश्रा, व्हेन यू ऐड जेड प्लस डी, इट वर्क्स, इट क्रिएट ए आउटपुट एज राहुल मिश्रा. सो string can be added using plus sign. Okay, but string cannot be multiplicated.
like you can do with the x cross y. Okay, x cross y is possible, but print z cross t is not possible. Okay, so we will print one by one, otherwise it will give error. Okay, so look at this, and so you can see 600. So what was the our value of x? 20, and y was 30. So when x multiplied by y, 600. That's right output. And if we do the same thing, z cross t, okay, it's technically not possible. So it will give the error. Multiply sequence by non-integer of type str, not possible. Okay, so we will remove it and see another example of data type, which is list. So let's create a list. Maybe I'm creating a list of fruits, and so list is created with using brackets. Okay, so bracket is equal to bracket, and then apple, banana, papaya. Okay, and print this variable, which is list. So you can see apple, banana, papaya, which is fine. Okay, so it is printing well. Okay, so while I told you like list and tuples, so I told you something. List is ordered and mutable, and tuple is ordered but immutable. So what is the difference between mutable and immutable? I told you that I will tell you why, like, doing it a program. So in example, so here fruit, which is I'm saying it is defined as list because it is created using brackets. So fruit, we can basically mutate it. Like we can, it is mutable, so we can append, we can change any other value or remove as well. Okay, so let's do it. Fruits. Let's say I am making a change at second position. I am adding kiwi. Okay, and let's print it again. Print fruits. So here it is. You can see apple, banana, kiwi. So papaya is replaced with kiwi. So that's good. I mean that's what it means. Like we can change in the tuple. Let me remove this first. Again, sort. Now define another variable tuple. Okay, so maybe teams is equal to, and as we know, like parenthesis used to create tuple. Okay, so we will use the parenthesis, and here we will make let's say a, let's say b, let's say c. These are the three parameters inside this parenthesis. We have created a team, and since we have created using parenthesis, so it is actually tuple. Now print the tuple. Okay, so look at the output. It's good. ABC same like the list. So there is no difference till yet we have found. Now try to add one thing. Put 1 is equal to teams. Sorry, teams 1, and here put D. Okay, let's see if this works. Now print again. Teams. Okay, execute the code. Here you can see track back most recent call last file team1 is equal to D tuple. Tuple object does not support item assignment. Once you have created the tuple, you cannot make
changes it to it. That means it is immutable. That's the if someone asks what is the meaning of mutable and immutable, what are the difference between list and tuple, you can simply answer this. You can give also a beautiful example like this, okay? And that's all you have to do. So here you see like tuple and how the tuple and list are different with each other. Okay. So now remove this because this creating error. Now we will move to sets. So set is also a data type. And while reading about the set, I told you like it is. I told you two words: sequence and order, sequence and unique and sequence. So what is the meaning behind these two words? So let's make one. Okay, so maybe I'm making it class schedule. It's a big name. Okay, class. Okay, class, and I'm creating it with here. Look at this. Tuple was created, list was created with brackets, then tuple was created with parentheses, and now class is created, maybe not the class, maybe class later. Okay, we can take name because class is a defined parameter, so maybe create error. So we will class A, and here we will make a list, let's say 1 comma 2 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 5 comma 5 comma 6. Now print this. Okay, print class A. Okay, and look at the output. You can see 1 2 3 4 5. That's a magic, is not it? So if you have a you have defined it like 1 2 2 3 4 5 5 2 times 5 2 times 2, but it is now removing all the duplicates values. That's the meaning. When I told you about the data type set, it is basically convert like any list, sorry, any set, any set of data where there are duplicates. It just remove the duplicates and create a unique list. Now what is the meaning of the duplicate and sequence? So let's make another change. Class A is equal to, now this time we will do it like this: 5 4 1 2 3. Let's say 4 5. So we have duplicate as well as an unordered list. Now print this. You can see 1, 2, 3, 4, 5 is not sequential, as well as all duplicates removed from the set. So that is the property, and that is the beauty of Python as well. Like Python is a very strong language. When we say it, then it also prove. So we will move to the next one and the last one as well in our list. So let's remove them and maybe add a dictionary, which is it's short name. Okay, so we will make a variable. Let's say we are making a trainee, and then we are using it again as curly brace, and this is also defined as a curly brace, but it's key value pair. Okay, so we will put a name, maybe trainee name, and maybe Rahul as always, and age, I'm a newborn. Okay, so let's say print trainee. Look at this. So you can see name Rahul, age 4, that's printing well as always. If I want to print, if I want to print
let's say trainee, and I want to only print name. Okay, and maybe I want to also print trainee age. Okay, let's say I want to print both. Okay, maybe I want to print more things. Yeah, I am a trainee. My name, my name, my is okay. So let's print it. Oh, sorry, something. Because key is very, like type safe. So you have to mention exactly what you have used. So you can see, I am a Rahul, means trainee. I am a, I have to choose some other sentence. Anyway, I am Rahul. I am Rahul. To both the A. It's not looking cool. Rahul, my age is 4. Okay, I'm a newborn. Okay, so here it is. So that's all. So in this session, you are able to get the data type in detail. You know Python, why Python is type safe, why Python is like not type safe. Sorry, Here's what why I found. sorry, something wrong in my earphone, I think. So in this topic, you are able to find the details of the data type. You learned how to use them, when to use them, what are the different way of the assignment, how uh, like a few data types are compatible, how other one are not compatible. You also able to get whether Python is a strictly typed language or not. You also able to get whether Python is a runtime or compile time. So you got many things. You got many questions, um, and you also get many answers. So I hope like this whole video will help you and at least give you one or two questions in your next interview, definitely from this topic. Okay, thank you again. See you in next video. Bye.